Well, I think I have the pleasure of working in this health industry, being a student leader with Arun Jaitley ji, and now working with a person with undefined personalities. I think nobody can put his personality into the words. The great leader of not only India, but the worldwide, our Prime Minister Narendra Modi ji, who is more than a management guru. And when it was put in a question in a parliament that doctor, you are a doctor, somebody was an engineer. So I told him that I'm a doctor, I know more about medicine. You may be an engineer, you know about engineering, the management and subjects, and all which we don't know, the Prime Minister knows it. When he is no more a doctor, he is no more an engineer. So I have the pleasure of being his student as a management. But the things started in our Indian mythology, Indian culture, Indian tradition. What is being respected worldwide is today, what is that strength which binds 1.35 billion Indians, where every 50, 100 kilometers, the tradition change, the color change, the language change, the eating habits change, the dress changes. What is that which is binding together these 1.35 billion people? Maybe different part of the country, they have got a single religion. We have got 124 languages. We have got religions. We have got different economic and social demographic strategies. What is that binds together? That is the Indian mythology, culture, and art traditions for which God is expecting towards. So hopeful Professor Bakul Dholokia has rightly said that we will come out of this crisis. And what resilience word he defined today as a management expert and management guru. I know that my mother, the mothers taught us, जब बच्चा जमीन पर गिर जाता था तो माँ उसे कभी नहीं डांटती थी, उसे प्यार से उसकी मिट्टी झाड़कर उसे खड़ा कर देती थी. शेर ही गिरते हैं और जो शेर गिरकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी डेफिनेशन प्रोफेसर ढालकिया कह रहे थे कि महत्वपूर्ण नहीं कि गिरा कौन, महत्वपूर्ण यह है कि उस गिरने के बाद खड़ा कौन नहीं हो पाया गिरकर. मैं कह अगर सही समझ रहा हूं ढोलकिया साहब तो बिल्कुल रेजिलियंस शायद यही चीज है कि उस बच्चे को गिरने के बाद उठ के खड़ा कर देना, मिट्टी झाड़कर, उसकी चोट भी लग जाए तो कोई बात नहीं, शाबाश मेरे शेर. ये रेजिलियंस का मदर ने सिखाया मुझे कि बेटा दिस इज नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट डिड यू. आई स्टार्टेड फ्रॉम अ विलेज वेयर देयर इज नो पावर, was not power that day. My school was about 8 kilometers. Now we have 6,200 people working with me as a knowledge workers. And of course, I did not go to any of them. I didn't have the privilege. At that time, Bajaj Institute was not there. But yes, well, we feel proud that we have been the student of Institute of IIM Ahmedabad, of which Professor Dholakia was the director. We feel proud on saying that. But where the lesson started was, resilience started from that mother. Resilience started from the parents, the mother, that it is not important what we received as a legacy, the विरासत. विरासत में क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वसीयत में हम क्या छोड़ कर जाएंगे. आने वाले समय में हिंदुस्तान के बाकुल ढोलकिया ही कहीं कल के पीटर ड्रक होंगे. आज उनकी पूजा हम करेंगे, उनके शब्दों को हम याद करेंगे, और पंकज जी याद करेंगे कि हम हमारे बजाज इंस्टीट्यूट के उसमें से हमने ढोलकिया साहब को हमने अवार्ड किया. तो सवाल महत्वपूर्ण ये रहेगा कि विरासत क्या मिला नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन वसीयत के लिए हम इस देश जिसके लिए क्या छोड़कर जाएंगे, that is more important. And that was a part of what I was listening to Professor Rai, this management portion. गिरना, वसीयत करना, और अगर मैनेजमेंट का अगर पहला लेसन अगर कहीं सुन सकते हैं तो वो भी माँ से सुन सकते हैं. हम अपनी मातृशक्ति से सुन सकते हैं, अपनी पत्नियों से समझ सकते हैं, अपनी माओं से समझ सकते हैं. मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं डांटा. मेरे घर के अंदर 4 कुर्सियां थी मेरे ड्राइंग रूम की. जिस ड्राइंग रूम की शो की बात पीटर ड्रक ने करी है कि हम अपना ड्राइंग रूम सजाते हैं, फैक्ट्री के बैकग्राउंड में क्या चीज आउटसोर्स कर हम मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा ड्राइंग रूम, हमारा फेस, हमारा इंडिया का फेस, नरेंद्र मोदी चमकता है. When he hugs the international leaders, Trump and Shinzo Abe and Xi Jinping, yes, every Indian feels delighted and proud of. Yes, he is an Indian leader, Narendra Modi. So what was more important as a part of management guru, and was taught by my mother.
When we have only 4 chairs in my drawing room, and when I reach there with 10 of my friends, that mother, now I have come, I know that you have got only 4 chairs, and now my guests are 10. She will not let you down. She will organize the things. पड़ोस के घर से वो कुर्सी भी मांग लेगी, पड़ोस के घर से वो रूह अफ़ज़ा की बोतल भी मांग लाएगी, आपकी बेइज्जती नहीं होने देगी. That management portion which we learned, the past generation who has become now the experts in this subject, but definitely the lesson started from that. And yes, India has I was invited to Kyoto to deliver a talk on a business model where about 400 international delegates. I was asking them, I questioned when I reached there, that why did you invite me when there are expert doctors better than me, better placed than me, better knowledge than me? I'm not. So they asked me a question, what was your seed capital when you started your business venture? So I started writing 600 rupees. And in the column was written that please write in US dollars. So that 600 rupees got converted into $12. At that time, dollar was around some 50 rupees or so. So they said, we wanted to see, can something be done with $12 also? Yes, Indian can do it. And when we have teachers like Professor Bakul Dhalokia, and when we have leaders, when we have philanthropists like Suresh Prabhuji, Narendra Modi ji, yes, we can do. And when we have young entrepreneurs like Pankaj Agrawal ji and the team members of ICP who are creating every day when we are creating the knowledge gurus, the knowledge workers, what was the vision of Peter Drucker? Now this is coming. Earlier we used to, sir, how many sons you have, how many relatives, mamas, chachas and fufas you have. Now with this one child, we have now one syndrome. As a doctors, when a mother and father comes fighting at the end of the day, कि my son doesn't, ये खाता नहीं है, पीता नहीं है, हंसता नहीं है, रोता नहीं है, गाता नहीं है, सोता नहीं है, तो हम समझ जाते हैं उसकी बीमारी, इसको एक बेटा है. और हम उसको एक डायग्नोसिस हम लोगों ने बना दिया, OCS, वन चाइल्ड सिंड्रोम. उस डर में वो जीता है माँ बाप. ये मेरा एक बेटा, अगर मैंने 10 फैक्ट्री बनानी है, 20 फैक्ट्री बनानी है, बेटा एक है, कैसे चलाएगा? और अगर इस बेटे को कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ड्रग एडिक्ट हो गया, ये कल कुछ हो गया तो क्या होगा? उस डर में वो जीता है. हमारी पुरानी जनरेशन के लोग 2, 4, 5 भाई होते थे, एक फौज में जाता था, एक सोशल समाज का काम करता था, लोग मस्त रहते थे उठाकर. तो इस OCS सिंड्रोम के बाद आज मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की जरूरत, स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस इतनी हो चुकी हैं. डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम नहीं कर सकते और सारा काम खुद ही करना चाहेंगे और करे का क्रेडिट भी चाहेंगे, तो आज हम आगे नहीं बढ़ सकते. आज जिस विषय को आज लेकर हम सब लोग आगे शुरू हुए हैं, आई थिंक आई कॉम्प्लीमेंट द कंप्लीट ICP टीम एंड पंकज अग्रवाल भाई, एंड माय बिग सैल्यूट गोज टू ऑल ऑफ यू. मैं आप सबके सामने एक बहुत छोटा हूं, बल्कि स्टूडेंट हूं. मैंने शुरू इसी से किया था कि आई लव टू बी ए स्टूडेंट. About the balanced part of life, I'll be sitting in my room, I'll be listening the deliberation, what will be continuously sitting in this room itself. I've learned a lot from what Professor Dhalokia has said just now, and many such more deliberation will come in the future also. Thank you very much. Sabhi ko namaskar, my good wishes, and I seek blessings from my seniors. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. आपको सुनकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है और शरीर में एक नई जान आ जाती है. And thank you so much for giving the time, sir. Thank you so much.